And at the end of the poll, the launch director will confirm whether or not we are go for liftoff. Let's bring up the mission control nets now to listen in. This is the LD on mission, proceeding with the go, no-go sequence stage. Stages go. Avionics. Avionics is go. GNC. GNC is go. VCon. VCon is go. T1. T1 is go. GC. GC is go. PLS. PLS is go. RSO. RSO is go. MET. MET is go. MM. MM is go. SVMD. SVMD go. LD sub. LD sub is go. That concludes the go, no-go sequence. We are T-minus 11 minutes, 22 seconds and counting. We are go for terminal count at T-minus 10 minutes. From this time, the 3-word hold procedure is in effect. Okay. This time लग रहा है everything is fine. Okay. आप सभी का स्वागत है एक और लाइव स्ट्रीम में जहाँ पे हम देखेंगे रॉकेट लैब लॉन्च इलेक्ट्रॉन रॉकेट का। तो ये कल भी लॉन्च होने वाला था लेकिन काफ़ी तेज़ हवा थी इसलिए लॉन्च नहीं हुआ। आज लॉन्च किया जा रहा है। तो आज का मौसम ठीक ठाक है। डोमिनेंट हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर टू। ओके, आज का मौसम ठीक लग रहा है वैसे तो। लगता है कि लॉन्च हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। Okay, within a 10 minute. The NRO under their rapid acquisition of a small rocket contract known as Razor. This approach everything is fine. allows the NRO to What about pursue you, the Dominant? use of both large and small satellites to create a space architecture to provide global coverage to help answer a wide range of intelligence questions. The first 2 NRO missions to fly under Razor also launched on Electron in 2020 in a showcase of the NRO's चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं capability to मिशन deploy है क्या missions from और पूरा spaceports डिटेल। outside of फिर the United within a States. 9 minutes the It's great launching to the be electron supporting the rocket. NRO once Okay. again with launches on Electron, 2 separate तो ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट लैब कंपनी के द्वारा। रॉकेट का नाम है इलेक्ट्रॉन रॉकेट। ये मिशन लॉन्च जो कस्टमर है जिनका सैटेलाइट है वो है नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस NRO। इन्होंने ये सैटेलाइट बनाया है विद द कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एजेंसी। लेकिन कितने पेलोड का है और किस ऑर्बिट में जा रहा है ये नहीं बताया गया है, कुछ नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। ओके, और ये ऑपरेट किया जाएगा NRO पर ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एजेंसी। और जो इसका डेटा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट और भी टाई अप जो गवर्नमेंट है उनके साथ शेयर किया जाएगा नेशनल सिचुएशंस में। तो बस इतना ही डिटेल्स है हमारे बारे में हमारे पास। और कल ये लॉन्च होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। तो आज देखते हैं सक्सेसफुली लॉन्च होगा या फिर नहीं। इलेक्ट्रॉन रॉकेट है 2 स्टेज रॉकेट जो 18.5 मीटर लॉन्ग है, 1.2 मीटर डायमीटर है, जिसकी कैपेसिटी है 300 kg का सैटेलाइट लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। फर्स्ट स्टेज में लगा हुआ है 9 रदरफोर्ड इंजन और सेकंड स्टेज में लगा हुआ है 1 रदरफोर्ड इंजन। एक रदरफोर्ड इंजन लगभग 24 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है सी लेवल पे, और जो वैक्यूम ऑप्टिमाइज है वो 25 से 26 किलो न्यूटन के आसपास। ओके, कार्टव्हील गैलेक्सी टेकन बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप, न्यू इमेज ड्रॉप बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप। ओके, थैंक यू सो मच डोमिनेंट ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि मैं अभी देख नहीं पाया ये इमेज जेम्स वेब का। थैंक यू सो मच अगेन। more than 3 times its diameter and capable of lifting more than 40 times the payload mass that Electron can lift. That's right, we are deep into the development of our large neutron rocket.
Designed for larger payloads, constellation deployment, and even human spaceflight, Neutron is tailored to meet the ever-evolving needs of our customers. Neutron is a new breed of launch vehicle with reliability, reusability, Okay, जो and स्क्रीन पे दिख cost रहा है वो न्यूट्रॉन reduction रॉकेट है hard baked into the design. जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको वो न्यूट्रॉन रॉकेट है, वो अपकमिंग रॉकेट है रॉकेट लैब कंपनी का, जो काफ़ी बड़ा होगा और ह्यूमन फ्लाइट भी कर सकेगा, पॉसिबिलिटी है, और रीयूजेबल होगा। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों रीयूजेबल बनाया जाएगा। इसरो रियली वर्किंग ऑन RLV रीयूजेबल लॉन्च। हाँ, या दे आर वर्किंग ऑन इट। RLV का, हाँ, वो स्पेस शटल की जैसा है, वो टेस्टिंग काफ़ी दिनों पहले भी हुआ था, और मुझे लगता है अभी रीयूजेबल से ज़्यादा वो गगनयान पे फोकस है, पर काम तो चल रहा होगा। So if you want to be part of the team, build आप बता रहे हो या फिर पूछ रहे हो, मैं समझा नहीं। tune into our Neutron development update on September 21st to hear more about our development progress there. You can register to join that live webcast via our website. RLV का न्यूज़ थोड़ा सा मैं But for सुना now, था, back to the mission देखा on था, the मतलब pad, पढ़ा था। NROL-199. Let's check back in with the Mission ISRO is Control Center for the डूइंग रियली latest. ग्रेट। या अभी इसरो बहुत बढ़िया एक काम कर रहा है, जो NSIL न्यू स्पेस रिसर्च लिमिटेड, फुल फॉर्म शायद यही है, कि प्राइवेट स्पेस कंपनियां आगे आएँ, उसके लिए काफ़ी स्टेप उठाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप। तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट स्पेस कंपनी तभी आगे आएंगी। ये काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा कर रहा है इसका मतलब। आज भी हवा वैसे तेज़ लग रही है, क्योंकि जो फोम निकल रहा है, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन का, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रे और फॉग, वो काफ़ी भूल गया मैं, वो काफ़ी तेज़ फ्लो कर रहा है रॉकेट के आसपास। फिर भी देखते हैं आज का लॉन्च। Every launch, before we roll out to the pad and get ready for the mission, and of course, ignition and liftoff of Electron, each Rutherford engine goes through a rigorous that's test great for our campaign. country, yeah, Each of definitely. these engines, and in fact, each of their components, go through extensive quality assurance tests at our propulsion test facilities. Each pump and motor controller goes through a flight-like acceptance test on our test rigs before Yeah, that's great for our country, engine must first pass for before moving through two hot fire tests at one of as well as humanity. Finally, once the engines are assembled into the 9-engine configuration we call the power pack, the entire ओके, 4 मिनट्स 8 तो वैसे शाम को लगभग ULA का भी लॉन्च है, 4 या 6 बजे के आसपास। उसके बाद रात को स्पेस डिवीजन का, ब्लू ओरिजिन का भी लॉन्च है, और आज 2 चाइना के लॉन्चेस हैं, और हाँ, आज इतने सारे। आई एम वेटिंग सी द रॉकेट लॉन्च फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ओके, यू आर बिजी नाउ अ कपल ऑफ डेज, दैट्स ओके। क्या है ये? अच्छा, इलेक्ट्रॉन रॉकेट का रदरफोर्ड इंजन की टेस्टिंग। ओह वाह, Three minutes to go for the launch. रदरफोर्ड इंजन इलेक्ट्रिक फीड सिस्टम पे काम करता है, तो इतना छोटा सा रॉकेट है और 25 से 24 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि टर्बो पंप में इसे यूज़ किया गया है लिथियम आयन बैटरी। ये नया इनोवेशन और इन्वेंशन बोल सकते हैं रॉकेट लैब की तरफ से। Let's hand it over to our launch director to take us through the final reports from mission control operators and lead us into the 10-second countdown to liftoff. ओके, Econ, lock auto sequence and confirm. Confirmed locked. All operators, this is the LD on mission. We are go for auto sequence. Start at T-minus 2 minutes. LD is go for launch.
पेलोड कैपेसिटी इस रॉकेट का 300 केजी का है। लियो पे लो अर्थ ऑर्बिट में 300 केजी के आसपास ले जा सकता है। AVBs on internal power. AFDS is green and enabled for flight. Vehicle is fully on internal power. सो ब्यूटीफुल। रॉकेट लॉन्च भी देखो। और एसएसएलवी पेलोड का, हाँ 500 केजी है। एसएसएलवी का 500 केजी है। 7 तारीख को शायद लॉन्च हो रहा है, शायद नहीं पक्का लॉन्च हो रहा है। Load complete. System in recirculation. पर एसएसएलवी सॉलिड मोटर बूस्टर है और ये लोग यूज़ कर रहे हैं लिक्विड इंजन। एसएसएलवी को रीयूजेबल के लिए सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन ये रीयूजेबल के लिए सोचा जा सकता है। तो ये डिफरेंस है। Anti-cars ring disabled. कॉस्ट इफ़िशेंट हो जाएगा। तो मेन बात तो यही है ना। Stage 1, Stage 2, best for flight. ओके, लगता है आज लॉन्च हो जाएगा। High flow engine purge enabled. देखते हैं, काफ़ी एक्साइटिंग होगा। लेट्स गो रॉकेट लैब। Deluge is activated. लेट्स गो लेट्स गो। T-minus 20 seconds and counting. 16 10 10, 9, 9 8, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff. Vehicle is pitching over. What a beautiful shot. Stage 1 proportional is nominal. सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ। ज़्यादा देर तक लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि Discharge looks nominal. ये एक सीक्रेटिव मिशन टाइप का है। तो सेकंड स्टेज का ऑन बोर्ड कैमरा शायद Here we ऑन go, नहीं T है। plus 50 seconds into the NROL-199 Here mission we go, on yeah. its Antipodean adventure. Electron's Successfully engines will launched soon Rocket Lab. power down काफी slightly दिनों से ये to rocket prepare the launch- rocket to pass through max Q, or the point of maximum aerodynamic pressure against Electron during launch. Okay, crossing the max Q, maximum aerodynamic pressure. Cleared max Q. Yeah, congratulations Rocket Lab, max Q पार करते हुए। Stage 1 propulsion is nominal. And Electron has passed through max Q, the rocket's first major test after leaving the pad at Launch Complex 1 on the coast. You see below there on your screen. Electron's 9 Rutherford engines are firing hot as they burn through the first stage's tanks of liquid oxygen and RP1 propellant. T plus 1 minute and 42 seconds, and Electron's trajectory is also looking good. The rocket is at now over 30 kilometers above Earth and moving quickly at nearly 4,000 kilometers an hour. ओके, तो काफ़ी दिनों के बाद रॉकेट लैब का, काफ़ी दिनों के बाद नहीं, विद इन 1 और 2 वीक इन्होंने लॉन्च किया है। और काफ़ी नंबर ऑफ लॉन्चेस बढ़ रहे हैं रॉकेट लैब कंपनी के भी, क्योंकि 2 अब हो गए हैं। 10 seconds to Miko. स्पेस लवर आर ऑलवेज एक्साइटेड टू सी समथिंग एक्साइटेड, या डेफिनेटली। तो आज का मिशन सक्सेसफुल होता हुआ रॉकेट लैब की तरफ से। ये काफ़ी Miko confirmed.
दिक्कतों के बाद, काफ़ी दिक्कतों नहीं कहेंगे। ओके, सेपरेट हो गया फर्स्ट स्टेजिंग। ओके ओके, फर्स्ट स्टेज सेपरेट हो गया, सेकंड स्टेज भी। सेकंड स्टेज का ऑन बोर्ड कैमरा ऑन है, मुझे लगा था नहीं होगा। गुड। फर्स्ट स्टेज इस बार यूज़ There you नहीं heard किया it जा and रहा है। saw it on your screen. All three events happening back to back through MECO, stage separation, and second stage engine start. Currently on your screen is Electron second stage, continuing nominally for the NROL-199 mission. Soon it will shed its payload protective fairing to lose the unnecessary weight now that the vehicle is in space. Yeah. In fact, Okay, there it fairing goes. We can separation see हो it गया। falling away on our screen there. सक्सेसफुली फेयरिंग सेपरेशन हो गया। 29th सक्सेसफुली लॉन्च ऑफ रॉकेट लैब। Congratulations again for the Rocket Lab company and the Electron rocket. Kick stage in the payload. Everything continues to look nominal with the Rutherford engine glowing bright as it powers the mission on. Oh, finally. दोनों स्टेज में सेम फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, RP1 मतलब केरोसिन, रिफाइंड केरोसिन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। ये सेम फ्यूल यूज़ किया जाता है फैल्कन 9 रॉकेट में भी, मर्लिन इंजन में। लेकिन जो रैप्टर इंजन है उसमें यूज़ किया जाएगा मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। The burn of this engine lasts for about 7 minutes to help bring the payload closer to its final orbit before we have a second stage separation that enables our third stage, known as the kick stage, to carry on with the rest of the mission. Our kick stage is critical in delivering the NRO the exact orbital insertion they need for this national security payload. With its own reliable Curie engine, our kick stage can be maneuvered precisely to achieve pinpoint orbital drop-off of the NRO's payload. That payload deployment is expected to take place around an hour from now. Okay. Very happy to see this happening finally. Yeah. Everyone happy. क्योंकि काफ़ी डिले के बाद ही लॉन्च हुआ है। बहुत दिनों पहले भी लॉन्च होने वाला था, फिर कल लॉन्च नहीं हुआ, फिर आज लॉन्च हुआ, वो भी वन गो में। काफ़ी अच्छी बात है। Stage 2 propulsion still nominal. ये अर्थ का कर्व देखने लगा है। कर्व हमेशा अमेजिंग होता है। Look at that beautiful view from space. Everything is looking great so far on this Antipodean adventure. Coming up to T plus 5 minutes and 9 seconds, and Electron's stage 2 engine continues to fire nominally along our expected trajectory, ready to deliver the NRO payload to space. आज इसी कर्व को देखने के लिए शायद 6 लोग, शायद नहीं पक्का 6 लोग जा रहे हैं स्पेस टूरिज्म के लिए न्यू सेफर्ड रॉकेट की मदद से, ब्लू ओरिजिन का। या थ्रस्टर इज गेटिंग रेड We are about 1 minute away now from our next mission vacuum milestone, the optimized swap of our nozzle red rocket's हो गया। batteries, providing electric power to the stage 2 Rutherford engine you can see on your screen. So the Rutherford's electric fuel pumps use electricity rather than a pre-burner to operate. But once the batteries are drained, we don't need them anymore. They become unnecessary weight on the second stage, so they're discarded when we swap to a fresh new one that keeps the engine running. This is our battery hot swap event, which you can see about 3/4 of the way up the timeline on the left of your screen, and coming up shortly on the main screen, you should see that shiny silver object pop free. Okay. Throttling down. Approaching hot swap. There you go, right on time. We have had Battery battery hot injection. swap on the अच्छा, second battery stage. हटा दिया, Confirm extra weight across the हटाने के nets लिए। and visually if you saw them falling away from the rocket on your screen there. Our home planet Earth is looking very beautiful for me. Yeah. अब तो ज़्यादा कर्व दिखने लगा है, काफ़ी मैसिव और
huge We've had a giant clean run through mission milestones so far. It was only 7 or so minutes ago that Electron cleared the pad at LC1, having since completed successful passes through max Q, main engine cutoff, and stage separation to reach this point now in the mission. Next up will be the second stage engine shutdown and the final stage separation that will follow the same process as the earlier MECO and separation of these stages, the first and second stages. So right now, though, with stage 2's engine still firing, the mission remains on its trajectory to orbit as expected, and all is going well for NROL-199. ओके 3-4 मिनट तक शायद ये और चलेगा 50 सेकंड स्टेज, सेकंड। उसके बाद सेपरेट हो जाएगा, फिर पेलोड अपने ऑर्बिट में चला जाएगा। ओहो, We are well past the Kármán line now, traveling to this mission's destination in low Earth ओके orbit. कारमान लाइन When अभी we पास reach the किया है end of इन्होंने। this second stage burn and separate the kick stage, we'll drift along in an elliptical path around Earth before the kick stage's engine lights up and propels the mission into a circular orbit. That happens just moments before payload deployment and the end of the mission for Rocket Lab. From the ground to space and on-orbit operations within only an hour is pretty cool. I love to see rocket separation. That's so satisfying. Yeah. Okay, so in the next minute or so, we should Very. reach the final acts of the second stage for this mission, the shutdown of its Rutherford engine, called SECO, before the kick stage separates and carries इन्होंने on अभी with the बोला कि payload. कारमान We'll see लाइन the अभी engine's पार nozzle किया है। fade कारमान from लाइन होता है bright 100 red as it किलोमीटर cools फ्रॉम द down, सी लेवल। and from there we'll be ending the broadcast Here as the start the mission space. continues to its classified orbit. Everything looks fine. The launch. SECO confirm. ओके, सी को कंफर्म। Let's do सेकंड some स्टेज सेपरेट हो गया फ्रॉम द पेलोड Perfect transfer orbit. और शट डाउन हो गया है अपना रदरफोर्ड इंजन। There we go. That engine nozzle cooling off was the visual indicator, along with the confirmation from Mission Control, that the second stage engine has shut down and the kick stage with the NRO payload has separated. There are still a couple of events to go on the third stage before payload deployment for the NRO. Our third stage will first complete that initial pass of Earth before it ignites to circularize its orbit and bring the payload to its drop-off point in space. That action will mark the end of the mission for Rocket Lab, but the start of the spacecraft's operation in space for the NRO, and we'll update you on payload deployment across our social media channels once it's confirmed. It has been a busy few weeks at Rocket Lab with the launch of the capstone mission to the moon only 5 weeks ago, on-orbit operations for that mission for the week following, and another mission for the NRO soon after that. Between capstone and NROL-162 was our shortest turnaround yet at only 15 days, God, with good to only be done. 22 days to get us to today's mission. यही मैं Keep बोल an रहा था eye कि on रॉकेट Rocket लैब का Lab's काफी with the back-to-back missions for both 162 and 199. And thanks to you at home for joining us on our 29th Electron launch. We'll see you back here soon. This is Rocket Lab Mission Control signing off. ओके, मिशन सक्सेसफुल हो गया। इन्होंने बोला कि किक स्टेज अभी होगा, इसका मतलब ऑप्शनल जो थर्ड स्टेज है रॉकेट लैब का इलेक्ट्रॉन रॉकेट का, वो इसमें अटैच किया गया है। वो ऑप्शनल होता है, वो डिपेंड करता है कि पेलोड को किस ऑर्बिट में भेजना है, तब वो थर्ड स्टेज को यूज़ करते हैं, जिसका नाम है फोटोन। तो इस मिशन में शायद फोटोन थर्ड स्टेज का यूज़ किया गया है और काफ़ी बिजी शेड्यूल था पिछले 4 हफ्तों में रॉकेट लैब कंपनी के द्वारा, क्योंकि कैप्चर मिशन जो मून मिशन किया गया है नासा का वो किया गया, फिर उसके बाद 166 मिशन NRO का किया गया है जो 2 हफ्ते पहले किया गया था। अभी फिर से लॉन्च किया गया NRO-199 मिशन। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक सक्सेसफुल मिशन रहा, तो थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग एंड स्पेशल थैंक यू फॉर द डोमिनेंट जो हमारे साथ
बने रहे और कमेंट करते रहे। थैंक यू सो मच। तो अगली लॉन्च होगा यूएलए का, वो लॉन्च होगा लगभग 6 बजे के आसपास या फिर 4 बजे के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तब हम फिर से लाइव स्ट्रीम करेंगे। और एक और लॉन्च है रात को 8 बजे के आसपास ब्लू ओरिजिन का, मतलब अमेजॉन कंपनी का न्यू सेपरेट रॉकेट के। बाकी 2 और लॉन्चेस है चाइना का, लेकिन लाइव स्ट्रीम शायद वो नहीं करेंगे, तो लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगी। लेकिन 2 लॉन्चेस की लाइव स्ट्रीम हो जाएगी, एक 4 बजे और एक 8 बजे, दोनों रॉकेट का, अगर वो लॉन्च होते हैं आज। आशा करते हैं कि वो लॉन्च होंगे ही आज, सक्सेसफुली होंगे। तो फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे के आसपास। तो थैंक यू सो मच डोमिनेंट अगेन। सी यू सून। ओके, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।